So we are to continue with the topic calculus 1, and under the heading of calculus 1 we have to start a new concept related to this topic, that is maxima and minima. That how to find out the maximum value of a function and minimum value of a function. But for this, we have a function f of xy. Mean f is a function of two variables x and y, and we have to move according to the number of variables of this function. And this function will have two variables x and y, and the working procedure for this is del f by del x equal to 0 and del f by del y equal to 0. Put equal to 0 both the derivatives, partial derivatives are there, and by putting the derivatives equal to 0 you will be able to find out stationary points. Stationary points are stationary points are extreme points. These are the points at which the function will have either maximum value or minimum value. This will be the second step, and the third step is you need to find out the double order derivative terms. First is del square f by del x square. Second is del square f by del y square, and third is del square f by del y square. You need to calculate this, and it is clear. First order derivative with respect to x is denoted by small p, and this derivative is denoted by small q. This was discussed when we have started the concept of this earlier, when we have discussed about the partial derivatives. So we have stated there, these are the standard values. First order derivative with respect to x is denoted by small p, this is by small q, and this is by small r, and this is by small s, and this is by small t. So this is another important step for finding out the maxima and minima. The next step, number 4, is you need to check RT minus S square. And if RT minus S square is greater than 0 with R is greater than 0, therefore f of xy is a maxima. Maximum, it will have a maximum value for the point. Obviously, this condition will be verified for a point. Suppose the point is x1, y1. And what is this point? This will be the point which we will get after putting the derivatives, first order derivative equal to 0. You can get at least one point. आप एक पॉइंट भी हासिल कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी आएगा, ये डिपेंड करेगा फंक्शन कौन सा दिया है. एक से ज्यादा पॉइंट भी आपके पास आ सकते हैं, तो आपने हर एक पॉइंट के लिए ये कंडीशंस वेरीफाई करना है. तो ये एक तरह से सब कंडीशन है मैक्सिमा की. एंड वी must have some condition for minima also, that is RT minus S square greater than 0. Sorry, this condition is for less than 0. R is less than 0.
Audible to you? Am Yes, I sir. audible to you? Yes, sir. Am I Yes, audible sir. to you? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Are you listening? Yes, आपको आवाज sir. आ रहा है? Yes, sir. आपका आपका आवाज भी कम आ रहा है आज, कोई प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट का ना. आप सर चलो, आपकी आवाज आ रही है सही से. we were discussing about this. अगर RT minus S square greater than 0 with R less than 0, then that point is a point of maxima. RT minus S square greater than 0, R greater than 0 हो, so it depends upon the value of R. Then f of I x y is a minima at the point, and the point we can take the same, that is x1 y1. हमारे पास ये दो इम्पोर्टेंट केस होते हैं, सब केस चाहिए बस, मैक्सिमा का और मिनिमा का. थर्ड इज आल्सो सर इम्पोर्टेंट, ये कौन सी पॉइंट लिखे हैं? that is for saddle point. सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना मिनिमम वैल्यू होती है. तो इसके लिए वी नीड टू check, and what is the procedure? If RT minus S square less than 0, then that point is neither maxima point or nor a minima point. So then the point is said to be a saddle point. Saddle point. Are you listening? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we have a question related to this. Find out the maxima and minimum values of the function f of xy is x cube plus y cube minus 3axy. This is the implicit function given to us, and you have to find out the maximum and minimum values. So first of all, step number 1, you will find out the first order partial derivatives with respect to x and y also. So with respect to y will be 3y square minus 3ax. Now the important step to find out the stationary points, and for finding out the stationary points you need to put these derivatives equal to 0. So ultimately what you will have, 3x square minus 3ay equal to 0, 3y square minus 3ax equal to 0.
and name it as equation. This can be given as equation number 1. This is equation number 2 and equation number 3. And from 2 or from 2, you will be able to find out the value of y, that is x square upon 3a. Now it will be used in this. So put y in 3. When you put y in 3, you will get x square upon uh, a. This should not be 3, this should be a, because 3 cancel हो जाएगा कॉमन लेकर के, 3 नहीं आएगा यहाँ पर. So x square upon a whole square minus 3 यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, ax equal to 0. Ultimately x4 and minus a cube x equal to 0. X can be taken common. X cube minus a cube equal to 0. कॉमन लेने के बाद यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं, x equal to 0 and a. These are the possible points which you will get. Because यहाँ से x यहाँ तो 0 होएगा, यहाँ ये 0 होएगा, यहाँ दोनों 0 होंगे. तो x equal to 0 यहाँ से आ गया और x equal to a यहाँ से आ गया. This is actually x cube minus a cube, and it will be the formula x minus a x square plus ax plus a square. Now यहाँ से 0 होना चाहिए ना. This should be 0 when either of two factors is 0. ये तो 0 हो नहीं सकता, because यहाँ पर all the signs are positive. अगर x 0 भी भर दें तब भी a स्क्वायर आता है. तो ओनली पॉसिबिलिटी इज x इक्वल टू a. तो इसीलिए हमने वो यूज कर लिया. तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गया, 0 एंड a. और अगर x 0 यहाँ यूज करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और x अगर a यूज करेंगे तो y भी a आ जाएगा. सो y इज आल्सो 0 एंड a. सो अल्टीमेटली दो पॉइंट आ जाते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 एंड द सेकंड पॉइंट इज a एंड a. Now, अब आपने इन दोनों पॉइंट्स के लिए चेक करना है कि इनमें से मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है, या कोई सैडल पॉइंट है. दिस इज वी नीड टू वेरीफाई. So for verifying what we require p. p is del square f by del x square. ये शुरू में डिस्कस कर चुके. So this come out to be 6x, and sorry, this is r, not p. And next is s, del square f by del x del y, and is minus 3a negative. Is 6x into 6y minus 3a square. That is 36xy minus 9a square. This will be RT minus s square. Now come to the points. First point is 0 0. तो हम 0 0 पर चेक करेंगे कि whether it is a point of maxima or whether it is a point of minima. So what will be the value? RT minus s square at 0 0 point. So 0 0 will be substituted here. That will be minus 9a square. Less than 0 आ जाता है. Less than 0 हो तो we know that we have this third case ऊपर discuss करा. This one, third one. When RT minus s square is less than 0, then this is a saddle point. Saddle point का meaning, at this point the function will have neither a maximum value or nor a minimum value. Therefore, f of xy has neither maximum nor minimum value at 0 0. So 0 0 come out to be a saddle point. Is it clear to you? Yes, sir. Clear? Yes, sir.
दिस इज द प्रोसीजर टू चेक. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जितने भी पॉइंट्स आए होंगे ना, हमने सभी को वन बाय वन चेक करना है. मान लो हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं तो हम तीनों को चेक करेंगे. अगर 2 आए हैं तो 2 को चेक करेंगे, अगर 4 आए तो चारों को चेक करेंगे. सो RT minus S square at A, that is 36. You just see the value of RT minus S square. यहाँ x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करिए और y का वैल्यू भी a सब्स्टिट्यूट करिए. तो 36 minus 9, that is 27 a square. और this value can never be negative. It will always be positive. So, hello. Yes, sir. It Yes, will sir. always be. It will always be. आज रात को आ रहा है. नेटवर्क इशू किसी का लग रहा है. So RT minus S Sir. square is always positive. So also अब आपको पता है कि हम we need to check R and R come out to be R is the double order derivative with respect to X, that is 6X. लेकिन हमें इस पॉइंट पर चेक करना है तो इस पॉइंट में x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट इज 6a. 6a. नाउ 6a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. क्यों? बिकॉज अगर a नेगेटिव हो गया तो वो फिर नेगेटिव बन जाएगा. सो वी शैल हैव सब केसेस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2. दोनों केसेस डिस्कस करेंगे. Case number 1 is when a is greater than 0 and case number 2 is when a is less than 0. So when a is greater than 0, r is equal to 6a will be greater than 0. और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया r का, then this is a point of minima. So f of xy has minimum value at a point. तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल देंगे. मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? फंक्शन में ए पुट करके जो गिवन फंक्शन है उसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ए क्यूब माइनस 3a क्यूब, दिस इज माइनस a क्यूब. ये मिनिमम वैल्यू आ जाती है. अब हम सेकंड सब केस करेंगे. व्हेन a इज नेगेटिव देन r इज 6a will be negative. Therefore, इस केस में f of xy has a maximum value at the point 2a. तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होएगा और अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड भी करनी है. मैक्सिमम वैल्यू comes out to be by substituting a and you will also get minus a cube. अब ये डिपेंड करेगा a के ऊपर. अगर a नेगेटिव है तो भी मैक्सिमम वैल्यू है और अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू है. लेकिन वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि पॉइंट तो वही है ना, पॉइंट तो नहीं बदलेगा. सो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन दिस. आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ये हमें कैसे होएगा कि ये a नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अब जस्ट सी, you can verify at home. अगर a negative है, listen to me very carefully. If a is negative, then this function comes out to be x cube plus y cube plus 3axy. तो ये नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. तो फंक्शन ये होगा और you will verify at home. a negative के केस में what we are getting? For a negative we are getting a minimum value, sorry, maximum value we are getting. It means by taking this function you will get a maximum value. You can verify at home by taking this function. But if a is positive then this is the original function. Original function यही रहेगा और अगर original function यही है तब हमारे पास function की minimum value आएगी. It is very much clear. So this is the way by which we can verify maximum and minimum values or find out the maxima and minimum points.
तो ये एक प्रोसीजर है जो हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के केस में, व्हेन ए फंक्शन इज ऑफ टू वेरिएबल्स. So I think it is sufficient. We shall continue with the same and we'll discuss more examples. So you revise at home, इनको revise करिए और फिर हम लोग आगे करेंगे. Thank you very much. सर